Okay. In simple words, मेरा क्वेश्चन ये है कि putting everything in one module and then import that module into different in our entire application versus directly importing directives or something in our entire application. आप ये बोल रहे हो कि एक तो ये कि है ना सब कुछ है ना शेयर्ड मॉड्यूल में डाल दो। हाँ, नहीं, ये जैसा ये है शेयर्ड मॉड्यूल ना, इसकी इस डेफिनेशन में ऐसा ही कुछ है ना कि डायरेक्टरीज और पाइप्स और ये सब इसके अंदर होती है और हम इसको इंपोर्ट करते हैं फॉर एंटायर एप्लीकेशन। अपन इंपोर्ट ही नहीं करते ना, शेयर्ड मॉड्यूल में इंपोर्ट करना ही होता है क्योंकि शेयर्ड मॉड्यूल ऑलरेडी इंपोर्टेड है हर मॉड्यूल के अंदर। ओके। तो शेयर्ड मॉड्यूल में रखने का ये बेनिफिट है जितना मैंने समझा है कि उसको बार बार हर जगह इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। मतलब जैसे कि अभी मान लो पाइप है, डायरेक्टिव्स हैं, कंपोनेंट्स है, इन सब के लिए आपको इंडिविजुअल इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, करेक्ट है ना। लेकिन क्योंकि ये कॉमन फंक्शनलिटी है पूरी एप्लीकेशन, ऐसा तो ही नहीं कि हम अननेसेसरी सारा पुट करेंगे, जो कॉमन फंक्शनलिटीज है उनको हम शेयर मॉड्यूल में रखेंगे। तो और उस जगह अगर आप सिंपल शेयर मॉड्यूल इंपोर्ट हो रहा है तो वो इंटरनली वो सब कुछ इंपोर्ट कर रहा है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा टेक्निकली। लेकिन अगर मैं इसको इंडिविजुअली रखूंगा और मुझे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 में चाहिए तो मुझे वहां पे ये सारे इंपोर्ट वहां यूज करने पड़ेंगे। सर मैं एक एग्जांपल दूं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसे अपनी जो भी एप्लीकेशंस अपन बना रहे हैं, जैसे आपके में अगर आप एनजी प्राइम यूज कर रहे हो, हम रेगुलर में हम एंगुलर मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो जैसे आपने ना उसका कोई कंट्रोल यूज किया है, जैसे आपको एनजी प्राइम का इनपुट यूज करना है या एनजी प्राइम का ट्री यूज करना है या उसका फाइल अपलोड यूज करना है, ये सब अलग अलग उसके मॉड्यूल्स हैं। तो जब हम उसको यूज करते हैं तो हमें उस मॉड्यूल को जिस अपने मॉड्यूल में हमें यूज करना है उन सब में उसको हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे हमें हमने ना 50 तरीके के एंगुलर मटेरियल के कंट्रोल है, हम उनको हमको जो जो चाहिए हमें उन सबको इंपोर्ट करना पड़ता है अपने मॉड्यूल में। तो जैसे अब हमारे अपने पास मल्टीपल मॉड्यूल्स है, ठीक, एक हमारा रिपोर्ट का मॉड्यूल है, एक हमारा एम्प्लॉय का मॉड्यूल है, एक किसी और का मॉड्यूल है। तो हमको वो सारे जो यूज करने हैं हमने सब में यूज कर रखे हैं, फॉर्म जैसे सारे मॉड्यूल्स में। तो हर मॉड्यूल में हमको वापस वो सारे, जैसे आपने 10 यूज किए तो 10 मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। उसकी जगह आप उन 10 को एक शेयर्ड मॉड्यूल में इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर जितनी आपकी बचे हुए मॉड्यूल है जिसमें आपको वो 10 यूज करने हैं, उसमें हम उस शेयर्ड मॉड्यूल को ही इंपोर्ट करते हैं। तो इससे वो सारे के सारे आपके सारे मॉड्यूल में इंपोर्ट हो जाते हैं। हमको 10 इंपोर्ट्स की जगह एक सिंपल इंपोर्ट लिखना होता है शेयर्ड मॉड्यूल का। ऐसा अपन अपनी एप्लीकेशन में करते हैं। तो इंपोर्ट्स की उसको कम करने के लिए सपोज आपने कल लेना कुछ नया ऐड किया या रिमूव किया फॉर एग्जांपल, तो आपको सब जगह से रिमूव भी करना पड़ेगा। कुछ आपने डिफरेंट यूज कर लिया तो उस जगह आपको शेयर्ड में आपने इसको लिखा है तो आपको वो जगह इंपोर्ट्स आपके बच जाएंगे। तो लाइंस ऑफ कोड्स रिड्यूस हो जाता है, एक तो ये बेनिफिट है इसका, और इजी टू एक्सेस हो जाता है। ठीक है, ये अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अपन इजीली उसको समझ पाएंगे कि ये क्या कहाँ काम आ रहा है, क्या आ रहा है ना। जस्ट मिनट। ओके, तो जो लाइक कॉमन मॉड्यूल जैसा मैंने बोला था, जैसा मैंने दूसरा बोला था फॉर्म मॉड्यूल, कॉमन मॉड्यूल में एनजी इफ, एनजी एल्स, ये अपन जो यूज करते हैं फॉर एनजी फोर और अदर जो दूसरी चीजें यूज करते हैं, अगर हमें ये करना पड़ेगा तो हमें हर जगह कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा हर मॉड्यूल के अंदर। लेकिन अगर इसको शेयर्ड में लिखा और आपने शेयर्ड में फॉर्म मॉड्यूल भी डाल दिया, कॉमन में डाल दिया, तो आपको हर जगह ये दो इंपोर्ट एडिशनली एक्सप्लिसिटली नहीं करने पड़ रहे हैं, आप शेयर मॉड्यूल के थ्रू ये दोनों चीज कर पा रहे हो। तो जहाँ दो इंपोर्ट करना थे हर एक के अंदर, वहां में एक ही इंपोर्ट से काम चल रहा है ना। ओके गुड। सो इसका मतलब है विदाउट इंपोर्टिंग इनटू एवरी फीचर मॉड्यूल, हर फीचर मॉड्यूल में हमको ये इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी कैन यूज इट इन इनटू एंटायर एप्लीकेशन विदाउट इंपोर्टिंग इनटू एवरी फीचर मॉड्यूल्स। ओके, नेक्स्ट है कोर मॉड्यूल्स। ओके सॉरी, not core module. Yes, okay, core. So
ये हमने ऑलरेडी डिस्कस चुका है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दिस मॉड्यूल इज टू इंक्लूड प्रोवाइडर्स ऑफ द एचटीटीपी सर्विसेज, है ना. सर्विसेज क्या है? सर्विसेज आर सिंगलटन इन एंगुलर एप्लीकेशन. सो एंगुलर एप्लीकेशंस में जो भी सर्विसेज होती है वो सिंगलटन ही होती है. तो अगर जिसको सर्विस बना रखी है वो ऑलवेज बी अ सिंगलटन. ओके, and it should not import it into other modules except only the root modules. जैसा मैंने बोला था पहले कि root module के अंदर इसको import करते हैं, उसके अलावा किसी भी modules के अंदर इसको import नहीं करते. तो there is no need to import in any other module because it is a part of core modules. Okay. So we will go little bit faster. But if anybody have a query, then please ask. Okay. So where we need to use, why we need this, we will discuss. So before that, we are going to discuss what are the advantages of Angular modules. So advantage of splitting an Angular application into multiple Angular modules as a application start to grow. ओके, सो जैसे 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 मैंने अभी एक दो स्लाइड पहले बताया था कि इफ यू हैव अ सिंपल नॉर्मल एप्लीकेशन देन यू डू नॉट नीड टू हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स. बट इफ योर एप्लीकेशन इज कॉम्प्लेक्स और लार्जर और एप्लीकेशन इज गोइंग टू ग्रो, then we need to think about it and need to identify the features areas by which we can divide our applications components and pipes and other things into modules. So the advantage of splitting an Angular application into multiple Angular modules as applications start to grow, what are the advantages? So anybody, anyone can point it out? Anyone? Okay, no problem. Yeah. So as we discussed so far, so what are the benefit? That is, the first one is the code, the organization. Code organization is a very first advantage of the Angular module, because everything is in a systematic or organized way. Like if we talk about feature areas, if we talk about core, shared, and the routing. So if I ask that where will be the routing things, so you will directly your mind is set and you directly go to the routing modules. Okay, if I talk about the services that we need to think and we need to redesign and we need to check this service, so where I will go, so you will directly go into the core modules. So because the everything have the specific place, or so we will directly go to the particular modules. So it is a benefit that we can easy to identify the where will the code will be. So it is a better core organization, so all the related things are a part of one features and other related things are the other features. So that is the first benefit that we have in Angular as an Angular module functionality, that is a better code organization. Okay, next is definitely the core reuse. Like if we have some common functionalities that we can put under the common or shared module, so we can reuse it again and again. So that is the second benefit. Okay, third one is code maintenance, because as I said that all the things are splitted and that are in organized way. So is it easy to um, maintain, or easy to identify, easy to debug the things in a modules. Okay, like if you have a getting error some in a employee list functionalities or something related to the employee, so you know that which feature areas you need, where you within which feature area need to go and check that what is the issue. Okay, so we can easily find, and that will be a we can easily and faster way to identify the code. So code maintenance is less. Okay, and last one
but not list, but that is a performance. So how Angular performance is just one thing. Okay, how Angular the modules help in a performance, like, so if we, for example, if we put all the things without modules in a on the root, then whenever you will boot the application, that what will happen, it will load, it will load all the components, services, pipes into the, while the application is boot, correct? Hello. Yes. Okay, so what is the drawback of it? Because It we are, will. yes, It might be slow. It might be slow, and yes, sometime it will be unresponsive, or might take long time to even show the login page. correct, correct. So if we go to load each and everything, that is our need or not, we are going to load each and everything, that will be definitely slow our application will load, uh, take a time. So here by the Angular module, uh, it's resolve this kind of issues. So uh, uh, in a module way, it will load only the we can load our modules in a two way, like lazy modules or agar modules, or in a background. So there is some different areas where we can use this. So if we do not want to do not need to load these some modules, that at the time of application is loading booting, so at that time we will only the select, or we are only we can make it other module as a lazy modules. So in the lazy things, that will not load it until unless we are not requesting on. Okay, but if we want some modules that are required or essential while we are booting the application or loading the application, then that should be a agar mode. So that will load while the application is booting. And there is some modules that we can do it in a background, so that also we can do it. So by doing so, it's improve the performance of our Angular applications. Okay, shall I move? Yes, sir. Yes. Mayank, Varsha, Yes. Nidhi. move. Sir. Okay, good. Okay, so let's move to next hmm, routing models. So I am not describing here that what is routing model, that we will learn in a examples. But in a routing models, as I said, uh, uh, it has a information about the which URL we are calling, and what the component we need to redirect to it. Okay, so like if I want to log in, then the URL will be a login localhost colon 4200 and any other port, and then I use a slash and login. So it will, what is the URL means, the initially there is some specific domain URL, and then we have some particular sub URL or API path. So that API path tell us that which component we need to ask. That information is a part of app routing module. Okay, and these are the, as you are doing, we have that root modules, core modules, share modules, and routing modules. So all the things are splitted according to your specific requirements. So in an app route, we are having the routing related things, and if a page is not found, then we can what the where we need to redirect the user in which page. So that all the things are the part of the app route. Okay,
I will discuss, or in a by we can discuss, because it is initial, as I said, that we will discuss in a more details in a futures topics, but in a next coming tomorrow's examples, I will try to explain you the basic things, so you can easily understand that how it will work. Okay. So next is properties. Okay, so every Angular module that have their own properties. What are the properties? That only we need to remember that these are the properties. That's it. Don't go in a details. So yeah. So first is declaration. Okay. Second is imports. Third one is export, providers, and bootstraps. Okay. Sorry. Okay. So everything that you are declaring in the modules, that is a part of declaration properties. Okay, all these whatever is point out here, these all the contains the array, means you can define a multiple declaration under the declaration property. Import means if any other component here that you are trying to use in our own modules, so that you can import it, like shared modules and core services and other things that are not a common but you want to import. So that imports elements that you can include in our imports array. Okay. Third one is export. If you want to allow, there is some components that should be export, means whatever you are trying to import, all are the exported in a different import. Like if you have a you are trying to create a module like import X. Okay, module X, sorry, and you are trying to import module A. Okay, so what I will do, I will import module A into the module X. Okay, but how module A will allow me to import the components or the pipes of the module A. Before allowing, the module A have to export that things for the outside. Okay, so that where there we use the export things. Okay, suppose I have a 4 types of pipes, but out of that only one pipes I want to export for the as a public, I want to make it public. So in that way I have to export that pipe X. Okay, providers, whatever the providers we are using, that will be a part of provided. And the bootstrap, if the application, if you are make it the part of app bootstrap, then we have to, that will be loaded at the time of application, so that will be a part of bootstrap. Okay, so these are the basic properties that we will again discuss in the future, but we should know that what are the properties. That's it. Okay, next. So I am about to finish this presentation, but there are some points, there are some commands that we should know or we discussed in last also, but I just want to share with you something. Okay, so there is a command ngGC and the component name, and the another command, the command is ng space g space m space module name. So by this module name and component, you can understand that these two commands are related to the to creating a component as well as to creating a module. But what is ng, what is g, what is m? M and c, we understand that c for component and m for module. What is g? G for anybody? No. G stands for generate. Okay, that's it. Okay, so ng here. Okay, ng. Thank you, Tusharika. Ng is a Angular CLI. So ng is a, whenever we type ng, it means we are trying to run Angular CLI command. So ng instance for Angular CLI. That you all should remember. G for generate. Okay.
Okay. C for components and M for module. Okay. There is a one thing that these are the shorthand of the command for to generate a component in the module. But you can also write ng space generate. You can write a complete one, generate C4 component. So you can also write a ng generate component and then component name. But it is a shorthand, so you can easily type and do it faster. Okay. Okay, chalo. That's, I think for today's it's enough. I will come with the example of employee with the try to make you all understand that what is the drawback and what is the benefit of using a Angular module. So first we create an application in a normal way, like creating each and everything under the one folder, and then we will split or divide that things into the module. So by doing so, we will easy to understand that why module is required and how how the difficulties will overcome. Okay. Anybody have query till now? Please ask. So I have one question. Mhm. Can we create multiple root modules in a single Angular application? Root module will be only one, but I think individual we can make. I am not sure about it, so I am not good in a position to give you the answer. But according to my understanding, the every application can have only the one root. That will be that will be help us to the application as a boot in the booting. But we can have our own root for the specific modules, I think. Okay. But root will be as on the application level, there will be only one root. Like only one module can be added in the bootstrap. Mm-hmm. No, bootstrap can have a multiple module, I think, because bootstrap is a process where what the things we need to load at the time of is a part of booting, I think. But I will search about it, and then will I come with your answer. Okay. Uh, okay. Anybody else? मल्टीपल बूटस्ट्रैप अगर करने भी होते तो उसमें कुछ लेजी लोडिंग अप्रोच यूज करनी पड़ती है, ऐसा मैंने पढ़ा था। Okay. Multiple जो AOT कंपाइलर होगा। यस सर। हाँ सर, आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोला। Go ahead. अच्छा, मतलब मैंने ऐसे ही पढ़ा था मॉड्यूल्स के टाइम पे कि अगर हमें मल्टीपल मॉड्यूल्स भी इंपोर्ट करने हैं तो उसमें भी वो लेजिंग लोडिंग अप्रोच यूज करनी पड़ेगी ताकि एट अ टाइम एक ही मॉड्यूल बूटस्ट्रैप हो। No, are you talking about root module? सर रूट मॉड्यूल भी अगर करना है तो, पर वो बात फिर वही हो जाएगी कि एट अ टाइम एक ही कर रहे हैं तो वो रूट मॉड्यूल करे या फिर दूसरा और कोई मॉड्यूल करे। Okay. Means you means that okay. I will search because okay. Anybody else? No, sir. Okay. So I hope that you all understand that whatever we have discussed so far. Yes, sir. Okay. Okay. Nidhi, I did give you some task on a last presentation. So have you read about it?
यस सर, Okay. So can you share? ट्राई किया था Hmm. सर। जस्ट नॉर्मली मैंने रीड आउट किया और समझने की कोशिश भी की थी। जस्ट एक प्रोजेक्ट मतलब ऐप क्रिएट करके VS कोड में। तो मैंने पढ़ा था कि जैसे अपन कोई ऐप क्रिएट करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, तो ऑटोमेटिकली वो कुछ जैसे अपन ऐप क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ फाइल्स क्रिएट कर देता है जो जो कंपलसरी और जो जरूरी है ऐप क्रिएट करने के लिए। तो उनमें से एक फाइल होती है पॉलीफिल। तो वो फाइल जैसे अपन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली बन जाती है। और इसका मेन वर्क क्या होता है कि जैसे अपन वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए ब्राउजर फीचर्स की नीड होती है हमें। तो मल्टीपल ब्राउजर को सपोर्ट करने के लिए polyfills.ts ये फाइल होती है मेनली। इसमें ब्राउजर्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है और जो भी स्क्रिप्टिंग की जो फाइल्स होती है वो इंपोर्ट होती है। जैसा कि ब्राउजर की कंपेटिबिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ फीचर्स तो होते ही अलग, लेकिन कोई एडिशनल फीचर हमें ऐड करना हो लाइक दे, जैसे मैंने कोड में देखा था, अगर अपन को कोई एनिमेशन का करना हो ब्राउजर में तो हम उनको अनकमेंट करके उनको ऐड कर सकते हैं। ऐसा मैंने पढ़ा था और समझने की कोशिश की थी। Okay. So mainly polyfill is used to support multi browsers. Is it? यस सर। Okay. Okay. Anything else? No? Okay, fine. Okay. I think it's 11:09. So I think we should stop here and we will continue tomorrow at 10. And I have request to all ISA team members to please join up to the 10:35 so that we can discuss our Orion points on time. Okay. So we will wait up to the 10:35 and then we will start on it. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you all. So just stop it and we will reconnect. We will I will drop a message for next meeting. So till then you go and learn about Angular and other things. I will assign the task one by one to all team members. Okay. So if I assign any task to someone, then he can or she can continue with that. Else I'm signing in a few minutes. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. Bye. Sir, I need to talk to you. Yes. Have a nice day. सर मेरा लैपटॉप चार्जर चल नहीं रहा है। Okay. कौन सा वाला है? एसर एस्पायर आर। सर एसर एस्पायर आर। सर पतली पिन है इसमें। ओके। तो एक काम करो, इसकी एक तो दो चीज करनी पड़ेगी आपको। एक तो इधर लक्ष्मी राज से बात कर लो, एक तो है ना। यस सर। और उनसे पूछो, उनसे बोलो कि क्या करना है पहली चीज, ठीक है, वो बता देंगे आपको उस हिसाब से। तो जो भी वो बोलते हैं, तो एक तो हमको मेल डालनी है, इसके बाद लक्ष्मी राज से बात कर लो, वो क्या बताते हैं उस हिसाब से एक मेल डालनी है, ठीक है, ताकि उनको पता रहे तो वो उसी वक्त इमीडिएट आपको रिप्लाई कर देंगे मेल का, ठीक है। यस और सर। जो भी वो सजेशन देते हैं क्या करना है, मतलब कहाँ से पिक करना है, क्या करना है, ताकि क्योंकि अगर अपने ऑफिस में तो होगा नहीं तो तुमको परचेज ही करना पड़ेगा। एक बार परचेज करना है तो क्या बिल विल लाना है, जो भी करना है वो उनसे एक बार बात कर लो, यस सर। ठीक है। वो कोई शॉप भी अगर बताना होगा तो बता देंगे या जो, ठीक है। यस सर। मुझे बताना क्या बात हुई आपकी, ठीक है। यस सर। ओके ओके। सर तब तक मैं एंगुलर। हाँ, एंगुलर मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तब तक आप। हाँ सर, क्योंकि अभी मैं फोन पे तो ये लर्निंग ही कर सकती हूँ। हाँ, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ आपके हिसाब से, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बाय।